We will going to discuss about some of the common orthopedic problems in children. Okay, so orthopedic problems in children are quite common, and in day-to-day practice also we will see so many orthopedic problems, and many of the time we are not exactly in a position to give any particular advice to the parents because there are some uncertainty. ठीक है, हमें भी कुछ कभी कभी कंफ्यूज होता है कि इसको क्या हम करें. So such common orthopedic problems we will not go into detail, we will not see in detail we will see in some other classes. So today we will only see the commonly encountered orthopedic problems in a pediatric OPD and also its management and a proper advice to the parents. One of the most common problem that we will see is knock knee. Knock knee, that means it is also called as valgus. We have got two terms, one is varus, another one is valgus, and knock knee is considered under valgus, where both the knee are get approximated and the ankles are get separated. Okay, so this is called as knock knee. When I say knock knee, at birth, if you see, when a newborn is delivered, at birth if you see, all the babies will have mild physiologic varus, not valgus, varus. जो भी बच्चे डिलीवरी होते हैं ना, तो उस टाइम में आप उसको सीधा उसका दोनों पैर पकड़ के स्ट्रेट लाइन में लटा के देखो, so then we will find some bow leg. Okay, so at the time of the birth there is bow leg which is considered to be physiological, and especially this bow leg is more prominent at knee joint at the time of the birth, I am telling. But there is no need of any particular treatment for this, and this particular bow leg will be automatically get corrected most of the time by the end of 2 years. By the end of 2 years. Now what exactly happens after 2 years? Normally पहले 2 साल तक बच्चों में थोड़ा बहुत वारस रहता है, बो लेग रहता है, और 2 साल के बाद क्या होता है कि यूजुअली आप देखेंगे बच्चों में एक फिजियोलॉजिकल नॉक नहीं आता है. ठीक है, तो बच्चे का हाइट बढ़ जाता है और चलना वालना शुरू कर देता है. उस टाइम में आप नोटिस कर सकते हैं कि दोनों उसका नीज जो है वो अप्रोक्सीमेट हो रहा है, एक दूसरे के बहुत पास आ रहा है, ऐसा लगता है आपको. Okay, so after 2 years, up to 2 years, therefore I am telling, up to 2 years, the bow leg is physiological. Exceptions are there, and after 2 years, it is quite common to see the knock knees. Knock knees. Okay, so these knock knee which start usually after 2 years of age. So initially it progress, and again this knock knee also come down, gradually reduce around 6 years of age. Around 6 years of age. So these are all physiological actually. First we should know the physiological things. Bow leg is physiological up to 2 years, and after 2 years actually knock knee start, and this knock knee is physiological up to 6 years of age under normal circumstances. If there is a disease process or pathology, that's a different issue that we will see. So this, when we should know this particular aspect. Okay, now so child with the genu valgus, that means child with knock knee valgus, okay, knock knee before 6 years. okay, जो भी बच्चा है जो नॉक नी के साथ है 6 साल से पहले तक है, पहले है, तो हमेशा उसका जो है गुड रिकवरी रेट होता है. okay, always he has got a good recovery rate because most of the time it is physiological. Most of the time it is physiological. So if you give some mild correction and mild prosthetics etc, some correction etc, so then it will be very normally corrected. So the reason why the recovery rate is good in knock knee before 6 years is most of the time it is physiological. Okay, most of the time it is physiological. Now there are so many conditions which cause the bow leg and knock knee pathologically. Pathologically जो bow leg और knock knee जो होता है उसके लिए बहुत सारे cause है. Okay, so if you see the most common cause being rickets, we know that. Okay, rickets is the
disease of growing end of the bone. Okay, so it's the disease of the early infancy. पहले 6 महीने में जो होने वाला चीज़ है, early infancy. Therefore, Surya Darshana Samskara is indicated at the age of 1 month, because after that the baby should be get exposed to sunlight. Okay, anyway, so rickets is one of the most common cause where the pathological bow leg or pathologically knock knee may occur, or some renal osteodystrophies, renal problems, because renal rickets, we know that. Okay, the healthy renal tissue is very important for the conversion of the D3, for the formation of the D3, which is the most active form, and that leads to renal rickets. So any problem in the renal system, kidney system, that is renal osteodystrophies. Next, any asymmetric bone growth, suppose some other related bone problems, so that may also lead to this genu valgus and genu varum, or some skeletal dysplasia. These are some of the pathological issues which may lead to this particular genu valgum and genu varum. Okay, now again, whether it is physiological or whether it is pathological, how you will understand, that is very important, isn't it? Now see, if the deformity is significant, okay, suppose in case of rickets, or it may be in case of very active rickets or some renal dystrophy. Suppose in rickets we have got two things. We know that vitamin D ricket or nutritional rickets and refractory rickets. Okay, refractory rickets in condition where even after the supplementation of the vitamin D also condition will persist. Nutritional rickets means after the formation of after the supplementation of the vitamin D, the condition will be okay. So if the deformity is significant, then it alters the mechanical axis of weight bearing joint, leading to the pain in the knee. This is what exactly happens in case of pathological conditions. So if the deformity is going on increasing, then ultimately what it will do is it alters the mechanical axis of weight bearing. Okay, and it leads to pain in the knee joint. First thing what happens. Okay, so if the ricket is active, suppose a ricket is going on, ricket disease is there, and it is very active, then what happens? This particular deformity will be progressive. Okay, see, if the deformity is, or if the genu varum or genu valgum is because of physiological cause, then that particular deformity which is existing, that will go on improving actually, and it will not go into progression. Progressiveness is that it is not going on worsening. But if the ricket is there, metabolic disease is there, some other osteodystrophy is there, or some other skeletal dysplasias are there, then this part of deformity go on worsening as the time passes. So this is how you have to differentiate it. Okay, so sometime genu valgus may be the sequel of past rickets. That means initially child has the rickets and it was well treated by vitamin D, nutritional rickets, vitamin D, but by that time unfortunately this deformity is developed. Okay, so but that particular deformity is now there is no active rickets. Okay, but because of the previous insult there is a deformity. Now in such conditions what happens? Deformity persists as it is stable. It is neither increasing nor decreasing. Okay, so that is how you have to differentiate. So therefore, one very important, whenever you find genu varum or genu valgum, you have to find out it is a stable condition or it is an active condition or it is a progressive condition. Okay, वो जो condition है ना वो progressively चल रहा है क्या, तो वो condition है वो active है क्या, या वो condition जो है वो stable है क्या, पहले injury एक बार insult हुआ था उसी का आगे चल रहा है क्या. So you have to identify this, otherwise you are not in a position to differentiate between physiological and as well as pathological this genu valgum and genu varum. Okay, therefore history of vitamin D supplementation should be very very important, must be asked. Okay, आपने बहुत अच्छे से विटामिन डी का सप्लीमेंटेशन दिया हुआ है और उसके बाद जो है ये जो डिफॉर्मिटी का जो सीक्वल है वो अरेस्ट हो गया है, दैट मीन्स इट इज न्यूट्रिशनल रिकेट्स. Vitamin D is going on, but still the things are continuing. That means it is not nutritional rickets. It may be it may be vitamin D resistant rickets or some other metabolic problems, osteodystrophy, skeletal dysplasia, कुछ भी हो सकता है. So identification of this point is very very important. Nowadays it is a routine practice that we always give vitamin D drops for the newborn, because 1 month onwards actually the growth plate formation starts, and afterwards what happens?
If the vitamin D is not available, calcium deposition will not be there, and many things will going to stay, and the rickets will start there. Therefore, rickets is called as the disease of the early infancy. It's not in the late infancy. Early infancy itself it forms. Okay, so this is one important thing. Now these are the pictures. So everybody knows that this is both the knees are touching and the ankles are aparting. Okay, both the ankles are staying apart, but both the knees are touching. This is very typical of a knock knee. Okay. Okay. Now knock knees, and if you see, this is the angle that we will discuss later. So now we will discuss about knock knee. Again, in the knock knee, if you want to see, if you want to examine the knock knee or genu valgum or genu varus, then we have to follow a procedure. What is that procedure? The procedure is child should be made to lie on the supine position. बच्चे को जो है आप पीठ का बल जो सुला दीजिए. Child should be made to sit lie on the supine position with the lower limbs are straight. Keep the both the lower limbs very straight so that the patella, ठीक है, दोनों नी का जो पेटला है वो ऊपर रूफ को देखना होगा. ठीक है, देखते रहे. सो इस तरीके से यू हैव टू कीप दी दिस वेरी स्ट्रेट. ओके, सो चाइल्ड शुड बी lie on the supine position with both the limbs are straight and patella is facing upwards. Now measure the distance between two medial malleoli. नीचे जो है एंकल जॉइंट के पास दो malleoli है ना, राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों का. सो आपने फुट को जो है अप्रोक्सीमेट करके एक पास एक रखे हैं. ठीक है, तो अब जो है वो malleoli के बीच का डिस्टेंस देखो. यू जस्ट लुक एट द डिस्टेंस बिटवीन द टू malleoli. ओके, so this is called as the distance between these two malleoli is called as intermalleolar distance. Okay, so now this is very important criteria to understand whether the child has got knock knee or bow leg or whatever. Okay, now if normally intermalleolar distance will be less than 2 cm. Normally intermalleolar distance will be less than 2 cm, and now this is very important criteria to identify whether any particular disease is active or it is progressive, etc. To check this, intermalleolar distance should be checked periodically. If the disease is active, what happens as the time passes, this intermalleolar distance go on increasing, isn't it? Normally it should be 2 cm. Now by the time it increases up to 3 cm, then 4 cm, 5 cm, that suggests that disease is active and the problem is going on. Okay, disease is active and the problem is going on. So this has to be evaluated periodically, and if it is progressive, then it needs an orthopedic referral. You have to refer the case for the orthopedics for the further needful action. Okay, now therefore a deformity is of more than 15 degree. Number one is the deformity is occurring which is more than 15 degree. As you see in this case, this is a degree here in the picture. Okay, if this is more than 15 degree with the intermedullary distance is more than 10 cm. Now this is a checkpoint now. Okay, if that particular deformity angle is more than 15 degree with the intermedullary distance is more than 10 cm, and one which is occurring after 6 years, we know that after 6 years the physiological knock knee will going to disappear, isn't it? After 6 years also it is present. Intermedullary malleolar distance is more than 10 cm and the deformity angle is more than 15 cm, then it has to be orthopedically corrected. Now this is not our case. Okay, it has to be referred for the orthopedic surgeon or whatever for the next management. Okay, so this is one important thing. Similarly, same thing if you see in case of bow legs. Okay, bow legs. In case of bow legs, what actually happens is tibial bowing is common in the first year. I told that immediately after birth child will have bow leg. Okay, that will continue up to next 2 years. By the end of the 2 years that will be get corrected by itself. If it is not corrected by that time, you have to evaluate. Okay, now if usually which bowing will occur, that is always tibial. The tibial bone bowing will always occur. Okay, so that is very common in the first year. Okay, bow legs are common during the second year, I told already. Now the knock knees are most prominent between 3 to 4 years of age. I told up to 6 years knock knee will be there. 2 years it will start.
So in between 3 to 4 years it will be more active. So this sequence you should know. First there will be bow leg up to 2 years, and afterwards there will be knock knees for the next 2 years. By the 6 years everything will be normal. Okay. As I told earlier, usually the baby will born with a physiological varus. However, a bow leg or genu varum more than 2 years is pathological. Knock knee more than 6 years is pathological. Bow legs persist for more than 2 years is pathological. Okay. And if you look into the cause for the bow leg, almost all the same causes of knock knee. Metabolic problems, rickets, skeletal dysplasia, developmental dysplasia of the hip, etc. Okay, so these are important things. So here also you go for that supine test. Ask the patient to lay down in the supine condition with the both the soles are approximated. Okay, then measure the intermalleolar distance. If it is progressively increasing, again it need a referral. So this supine test, this is one of the very important tests we have to do in the OPD whenever we got such cases. Okay, now, and these are some of the pictures of bow legs. Now we come to another important pathological problem, orthopedic problem in the pediatric OPD. What we get is club foot. Common, we know that, club foot. Okay, club foot, pathologically if you are seeing, many things are there. We will not go in detail. We are only going superficial today. Okay. Now, this deformity may be positional. Most of the time club foot, ठीक है, जो ankle joint का inversion है, ankle joint का eversion है, या जो भी है जो मिलता है हमें, so club foot, most of the time it is positional defect in the uterus. In utero life, baby attains that particular position of the lower limb or the ankle joint, because in the flex condition or eversion or inversion, whatever condition, and medial rotation. So because of that in utero position only, baby is having that particular club foot at the time of the birth. This is most common. Okay, first we'll see the common things, physiological. This is most common. Okay, so if it is because of positional defect, now two things are there. That particular club foot deformity may be physiological because of the positional defect, or it may be pathological because of congenital problems. Okay, now first we'll see the positional defect. Most of the time positional defect is because of the position attained by the baby in the fetal life. Okay, so that leads to that particular positional defect. Now, how you identify whether it's a congenital or positional? In case of positional, actually what happens, the club foot, whatever you are seeing, that is more flexible. If you try to correct it in a correct, if you want to manipulate in a correct position, it will come to the normal position on examination. Okay, that's very important thing. If it is congenital, it is very difficult to bring back it to the normal position. अगर वो पोजिशनल है, उसको आराम से जो है आपका इधर से उधर से प्रेशर दे करके टैलस में वगैरह प्रेशर दे करके उसको जो है नॉर्मल पोजीशन में ला सकते हो. अगर कॉन्जेनिटल है ना, वो इतना जल्दी आएगा नहीं और होगा भी नहीं. ठीक है. सो क्लब फुट विच इज पोजिशनल इज रियली फ्लेक्सिबल ऑन एग्जामिनेशन. And another important thing is a club foot which is occurring because of positional problem, it is very easy for the correction also. Okay, it is very easy for the correction. It's बहुत अच्छा recovery rate है. It is also easy for the correction. So that is possible to correct the deformity by passive manipulation. By giving some passive manipulation, you can correct that positional defect. Same if it is because of congenital bone problem, skeletal problems, then it is very difficult. Then it needs so many surgeries and all. So in long term, such cases can be very easily corrected with the frequent manipulation in the direction opposite to that of the deformity. How you have to correct that also we will see the next class. Correction क्या करना है कि deformity left मतलब inversion है तो उसको avert करना है, deformity medial rotation है तो उसको lateral rotation करना है. इस तरीके से opposite direction में उसको जो है manipulation करना है. That is a correction. That is a correction in case of a club foot. Okay, so this is how we have to differentiate between the positional defect of club foot and as well as a congenital defect of the club foot. Now, in congenital club foot, what happens? In congenital club foot, we have got many things. Talipus equinovarus, है ना, उसका अलग अलग varieties है, तो वो सब आपको पता है. Now, the congenital club foot, the bone itself is involved and deformed, so to some extent, so such patient will show even the calf muscle atrophy also. अगर congenital talipus है या congenital club foot है तो वहाँ पे बोन खुद इन्वॉल्व होता है, इसलिए बोन को मैनिपुलेशन करना बहुत मुश्किल है.
ठीक है, यहाँ पे पोजिशनल में क्या है कि बोन के इन्वॉल्वमेंट नहीं है, वो पर्टिकुलर पोजीशन में रखा है इसलिए जो है मसल टाइट हो गया या लिगामेंट टाइट हो गया, जो भी है इस टाइप की कंडीशन, सो इसको करेक्ट कर सकते हैं आप। बट कॉन्जेनिटल में क्या होता है कि दिस विल नॉट हैपन। इन केस ऑफ कॉन्जेनिटल, बोन इटसेल्फ इज गेट अफेक्टेड और डिफॉर्म्ड टू सम एक्सटेंट, सो सच पेशेंट्स विल शो कॉफ मसल एट्रोपी ऑल्सो, सो देन इट्स क्लियर दैट दिस इज अ कॉन्जेनिटल क्लब फुट। ओके, सो क्या होता है कि करेक्शन रिक्वायर्स द रिपीटेड मैनिपुलेशन। इस कंडीशन में अगर करेक्शन करना चाहते हैं आप, it requires the repeated manipulation and serial casting operations under the general anesthesia should be done। थोड़ा माने डिफिकल्ट प्रोसीजर्स है। जनरल एनेस्थीसिया में जो है बच्चे को सीरियल कास्टिंग करना पड़ता है और बार बार करना पड़ता है और रिपीटेड मैनिपुलेशन करना पड़ता है। बोलने का मतलब यह है कि आई मीन टू से दैट this is quite difficult for the treatment and recovery rate is also not so good। Okay, so if it is a positional defect and the results and the effort of correcting it is started at an early part of the life, then results are good। Even in congenital cause of club foot also, if it is started at the very early part, ठीक है, बच्चा पैदा हो गया, पैदा होते दूसरा दिन ही जो है आपने करना शुरू कर दिया करेक्शन, ओके, देन रिकवरी इज गुड टू सम एक्सटेंट। ओके, इफ यू गो लेट, अगर आप लेट शुरू कर दिया, इट नीड मोर एंड मोर सर्जरीज एंड मैनिपुलेशन, इट इज डिफिकल्ट। ओके, नो पैथोलॉजिकल क्लब फुट इज एसोसिएटेड विद द कॉन्जेनिटल डिस्लोकेशन ऑफ द हिप, मस्कुलर डिस्ट्रोफीज एंड स्पाइना बाइफिडा। कहाँ मिलता है आपको पैथोलॉजिकल क्लब फुट? यूजुअली कॉन्जेनिटल डिस्लोकेशन ऑफ द हिप, आजकल हम उसको डेवलपमेंटल डिस्प्लेसिया डेवलपमेंटल डिस्प्लेसिया ऑफ द हिप बोलते हैं हम उसको, उसमें मिल सकता है। स्केलेटल डिस्प्लेसिया में मिल सकता है, मस्कुलर डिस्ट्रोफी में भी मिल सकता है, ठीक है। और कभी कभी जो है ये स्पैस्टिसिटी, सेरेब्रल पाल्सी की वजह से जो स्पैस्टिसिटी है वहाँ पे कुछ डिफॉर्मिटीज आ सकता है। यूजुअली टो वॉकिंग आता है वहाँ पे, कुछ डिफॉर्मिटी आ भी सकता है। देन स्पाइना बाइफिडा, इन केस ऑफ स्पाइना बाइफिडा ऑल्सो यू मे गेट सच टाइप ऑफ अ क्लब फुट विच इज कॉन्जेनिटल। ओके, now these are the two pictures if you see। ये पहला वाला जो है this is positional and this was definitely congenital, it is very difficult to correct। so this is about the club foot। then we come to the another important part, that is a developmental dysplasia of the hip। so we have seen genuvalgum, genuvarum, then comes the club foot, now the developmental dysplasia of the hip। okay, this is one more big problem। now previously डेवलपमेंटल डिस्प्लेसिया मतलब हिप जो है, हिप जॉइंट का जो डेवलपमेंट है वो सही नहीं है, डिस्प्लेसिया हुआ है, ठीक है, एबनॉर्मल है। हिप जॉइंट का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो एबनॉर्मल है। सो नाउ डेवलपमेंटल डिस्प्लेसिया ऑफ द हिप, प्रीवियसली इट इज कॉल्ड एज congenital dislocation of the hip। previous days this is called as congenital dislocation of the hip, now it is called as developmental dysplasia of the hip, ठीक है। now the incidence of developmental dysplasia of the hip is more common in female babies compared to the male babies, and this is also more common in breech presentation, because in breech presentation सबसे पहले जो है आपका पैर आ जाएगा, उसके बाद पैर को आप खींचते रहेंगे, ठीक है। that time the chance of some sort of injuries or the mechanical pressure to the hip is always more, ठीक है। so that may lead to the breech presentation, that may lead to the displacement of the developmental dysplasia of the hip, or it is also observed that it is very common in female babies में common है। again it is less in Asian but it is more in European countries, ठीक है। यूरोपियन सिटीजन्स में जो है तो वहाँ पे इसका इंसिडेंस ज़्यादा है कंपेयर टू एशिया से, बट यहाँ पे भी मिल सकता है इन केस ऑफ ब्रिज डिलीवरी। तो अगेन इन दिस कंडीशन ऑल्सो द डिलेड डायग्नोसिस, यूजुअली सी हिप का डिस्प्लेसमेंट है बोल के कब पता चलेगा? डेवलपमेंटल डिस्प्लेसिया हिप जॉइंट में कोई प्रॉब्लम है, बच्चा चलना शुरू करने के बाद पता चलेगा आपको यूजुअली, है ना। उसमें भी जब शुरू में बच्चा चलता है तो हम बोलेंगे बच्चा ऐसे ही चलता है, उसके बाद एक 3-4 महीने ऐसे ही चला जाता है। सो लगभग 15-16 महीने के बाद आपको पता चलता है कि चलने में कोई प्रॉब्लम है, ठीक है। सो दैट इज टू लेट एक्चुअली। ओके, सो delayed diagnosis and treatment leads to irreversible complications। so if it is delayed and diagnosis delayed and treatment is also delayed due to so many causes,
देन इट लीड्स टू ऑलमोस्ट ऑल इरिवर्सिबल कॉम्प्लिकेशन, इसको सही नहीं कर सकते आप. ओके, सो इन therefore immediately after the birth when you examine the newborn it should be screened for developmental dysplasia of the hip. ठीक है, डेवलपमेंटल डिस्प्लेसिया आपको देखना है, बच्चे को सुपाइन पोजीशन में लटा के जो है जो दोनों लिम्स का लेंथ देखना है, मीडियल मैल्यूलस दोनों एक ही लेवल पे है क्या देखना है. ठीक है, और लेंथ डिस्क्रिपेंसी है क्या देखना है, और हिप जॉइंट स्पेशली जो हिप जॉइंट का लेवल में क्या राइट साइड में कम फोल्ड्स है, लेफ्ट साइड में ज़्यादा फोल्ड्स है. ठीक है, बटक का जो पोजीशन राइट साइड में ऊपर है, लेफ्ट साइड में नीचे है, इसका मतलब है कि वो डिस्प्लेसिया है. दे आर नॉट एट इक्वल पोजीशन, not in a equal position. So this type of screening is must and you should do in each and every infant, because if you diagnose the case at the early, then chance of recovery is more and we can go for early treatment and we can manage this case. ठीक है, और बहुत देर से आप उसको diagnose करेंगे, then chance of recovery is very less and there will be more and more complications. Of course, there is a test which is called as Ortolani test and बर्लोस टेस्ट. दो टेस्ट है, दो उसको चेक करते हैं हम. ओके, सो व्हाट यू मीन बाय ऑटोलोनी टेस्ट? दिस इज एग्जैक्टली द ऑटोलोनी टेस्ट. क्या करना है कि एग्जामिनर ग्रैस्प द ताई ऑफ द इन्फेंट. पहले आप बच्चे का ताई को पकड़ेंगे, ठीक है, अपना थंब फिंगर और इंडेक्स फिंगर के साथ. ठीक है, ताई के पोर्शन में. उसके बाद आपका फोर्थ फिफ्थ फिंगर के साथ आप क्या करेंगे, फिंगर यू आर एक्चुअली पुश द ग्रेटर ट्रोकेंटर. ठीक है, उसके बाद मतलब वो जो फोर्थ और फिफ्थ फिंगर के साथ आप क्या करना है कि ग्रेटर ट्रोकेंटर ऑफ द फीमर जो है उसको ऊपर पुश करना है. अब एक दो फिंगर से आपने पकड़ा है ताई को, पीछे का दो फिंगर से ग्रेटर ट्रोकेंटर को ऊपर पुश कर रहा है, और उसके बाद पूरा जो हिप है और ताई को जो है आपको एबडक्ट करना है. ठीक है, एबडक्ट करना है. सो एंड यू हैव टू देन ट्राई टू पुश दिस हेड ऑफ द फीमर इनटू द एसिटाबुलर कैविटी. ओके, सो अगर वहां पे डिस्लोकेशन है, इफ द टेस्ट इज पॉजिटिव, इफ द डिस्लोकेशन इज देयर, देन femoral head produces a clunk sound which is more palpable than audible. In case बच्चे में जो है displacement of the hip है, head of the femur एसिटाबुलम से बाहर है, तो जब आप इस तरीके से फिंगर दोनों थंब और इंडेक्स फिंगर से जो है ताई को पकड़ेंगे आगे से, पीछे से जो है ग्रेटर ट्रोकेंटर को जो है आप फोर्थ और फिफ्थ फिंगर से प्रेशर देंगे, और पूरा का पूरा ताई को जो है आप एबडक्ट करेंगे, तो क्या होगा कि हेड ऑफ द फीमर जो डिस्प्लेस हो चुका है वो वापस जाके एसिटाबुलम के अंदर जाके बैठेगा. जब वो बैठेगा तो वहाँ पे क्लंक साउंड आएगा, क्लंक बोल के एक साउंड आएगा. ठीक है, सो दैट सजेस्ट दैट द femoral head was displaced and now it is there in place. Okay, so this test is called as Ortolani test. तो यूजुअली इसको करना चाहिए, बट कुछ लोग इसको कॉन्ट्राइंडिकेट भी करते हैं, क्योंकि अगर नॉर्मल बच्चे में अगर है या नहीं है देखने का चक्कर में भी कभी कभी डिस्प्लेसमेंट हो सकता है. सो रूटीनली इट इज नॉट इंडिकेटेड एक्चुअली. ओके, बट इफ यू हैव ए डाउट दैट यहाँ पे एबनॉर्मलिटी फोल्ड है, लेंथ डिस्क्रिपेंसी दिखाई पड़ रहा है, तो तब आप चेक कर सकते हो. अदरवाइज normally it is not done because there is every risk of producing actual displacement या subluxation जो भी है. Okay, so these are the two important. No, अब slide change नहीं हो रही. Okay, so developmental dysplasia of the hip. If you see USG, जब आप USG में करेंगे, it is more sensitive. Okay, so you can also go for simple USG. जब आप USG करेंगे तो USG में भी आपको पता चलेगा, बट यूजुअली क्या होता है कि USG में सभी कभी फॉल्स पॉजिटिव आ जाएगा, ओवर सेंसिटिव हो जाता है वो, तो इसलिए कभी कभी डिस्प्लेसमेंट नहीं है फिर भी वो डिस्प्लेसमेंट जैसा दिखता है, क्योंकि बोन का ग्रोथ वगैरह ठीक से नहीं हुआ है ना, तो वैसे दिख सकता है. सो दैट्स वन इंपॉर्टेंट पार्ट. एंड सपोज आपने डेवलपमेंटल डिस्प्लेसिया ऑफ द हिप को इन्फेंट मैंने शुरू में नियोनाटल पीरियड में मिस किया, ठीक है, आपको पता नहीं चला, आपने मिस किया, तो उसके बाद इन्फेंसी में इसको कैसे पता चलेगा आपको? नेक्स्ट 1 मंथ के बाद 2 मंथ के बाद आपको कैसे पता चलेगा?
कि इसको डेवलपमेंटल डिस्प्लेसिया ऑफ द हिप है. सो दिस कैन बी आइडेंटिफाइड बाय लिमिटेड रेंज ऑफ एबडक्शन ऑफ द हिप. बच्चा जो है हिप का एबडक्शन बहुत कम कर रहा है, एडक्शन तो कर रहा है बट एबडक्शन बहुत कम कर रहा है. और ग्लूटियल फोर्स जो वहाँ पे दिख रहा है आपको बच्चे का, वो एसिमेट्रिकल है दोनों साइड में. एक साइड में ऊपर है, एक साइड में नीचे है, एक साइड में एक ही फोल्ड है, एक साइड में दो फोल्ड है. ठीक है, सो एसिमेट्रिकल है. सो दिस यू कैन आइडेंटिफाई. सो इसलिए एग्जामिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. वंस द चाइल्ड स्टार्ट वॉकिंग, एक बार बच्चा वॉकिंग करना शुरू करेगा, देन ही मे प्रेजेंट विद वैडलिंग गेट. ही मे प्रेजेंट विद द वैडलिंग गेट और एक्सेसिव लॉर्डोसिस with the hip or leg length discrepancy that I have already explained. And if it is detected early, then splinting with the pelvic hairness for a few months may be sufficient. एक treatment है, so that can be done if it is detected early. That gives a good result. And if not treated earlier, then later the surgical treatment should be done. अगर शुरू में नहीं करेंगे तो बाद में जो है आपको सर्जिकल ट्रीटमेंट ही करना पड़ेगा. Another last one is flat foot. Okay, another common problem which we'll see in the day-to-day practice, that is flat foot. So most of the younger children have the physiological flat foot. जब न्यू बॉर्न को आप देखेंगे, सभी बच्चों को देखने के बाद आप ऐसा ही लगेगा कि इसको फ्लैट फुट है. ठीक है, मोस्ट ऑफ द यंगर चिल्ड्रन, सो दे हैव दिस फिजियोलॉजिकल फ्लैट फुट ड्यू टू द फिजियोलॉजिकल लिगामेंटस लैक्सिटी. जो फुट का एक जो लिगामेंटस है उसमें थोड़ा बहुत लूजनेस रहता है. इसकी वजह से सभी बच्चे जो है, बच्चों को जो है देखते वक्त आपको ऐसे लगेगा, न्यू बॉर्न को देखते वक्त, ही हैज़ गॉट द फ्लैट फुट. ठीक है, सो सच पेशेंट्स आर रेयरली सिम्टमेटिक. ऐसे पेशेंट को जो है सिम्टम्स नहीं आता है. एंड देयरफॉर दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज हाइपर मोबाइल और फ्लेक्सिबल फ्लैट फुट. वो लिगामेंट जो है थोड़ा लैग्स है, इसकी वजह से वो जो आर्च नहीं बन रहा है और देखने में ऐसा लग रहा है कि ये फ्लैट फुट है. एक बार लिगामेंट थोड़ा टाइट हो गया ना, तो अपने आप आर्च आना शुरू हो जाएगा और फ्लैट फुट गायब हो जाएगा. ओके, नाउ इन सच पेशेंट, so such patients are usually called as flexible flat foot. It is also called as hypermobile flat foot. Ligament loose है, hypermobile flat foot or flexible flat foot. This is physiological and seen usually in a newborn. In such patient, आप कैसे पता चलेगा? In such patients, the longitudinal arch develops over the time between 5 to 10 years of age. तो ये जो लॉन्जिट्यूडल आर्च पहले नहीं बन रहा था बिकॉज ऑफ लिगामेंट का जो लैक्सिटी की वजह से, वो यूजुअली 5 to 10 ईयर्स के अंदर ये जो है अपने आप लॉन्जिट्यूडल आर्च बन जाता है. ओके, सो व्हेन इट इज सीन बिफोर दिस एज, इफ द चिल्ड्रन आर, इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? कुछ नहीं है, बट जो भी लड़का 1 साल का लड़का है, देखने से लगता है कि इसका फ्लैट फुट है, उसको स्ट्रेट खड़ा कर दो. ओके, सो चिल्ड्रन आर मेड टू स्टैंड इन ए फर्म सरफेस. ठीक है, जैसे हाइट देखते हैं हम स्टेडियोमीटर में, उसमें खड़ा कर दो उसको, फर्म सरफेस. एंड देन आस्क द चाइल्ड टू डॉर्सीफ्लेक्स द ग्रेट टॉय. ग्रेट टॉय है ना, उसको जो है वो डॉर्सीफ्लेक्स करे. तब क्या हो गया? जैसे वो डॉर्सीफ्लेक्स हो गया ना, कि आपका लिगामेंट वहाँ पे टाइट हो गया, वो जो लेग्स था लिगामेंट वो टाइट हो गया. टाइट होते जो है नीचे लॉन्जिट्यूडल आर्च आ गया. अगर वो डॉर्सीफ्लेक्स करता है और डॉर्सीफ्लेक्स करते ही नीचे लॉन्जिट्यूडल आर्च आ गया जो पहले नहीं था, तो इसका मतलब है ये जो है हाइपर मोबाइल या फ्लेक्सिबल फ्लैट फुट है. सो दिस इज एक्सपेक्टेड टू बी गेट करेक्टेड बाय इटसेल्फ बाय 5 to 10 years ऑफ एज. ओके, सो चिल्ड्रन नीड टू बी रीएश्योर्ड. इस कंडीशन में क्या है, बच्चे को रीएश्योर करना चाहिए. एंड देयर इज नो एक्टिव ट्रीटमेंट इज रिक्वायर्ड. ठीक है, एक्टिव ट्रीटमेंट जरूरत नहीं. हाँ, फ्लैट फुट में ट्रीटमेंट कब देना है बच्चे को? अगर बच्चा पेन कंप्लेन करता है, इफ देयर इज ए पेन, ओके, इफ द चाइल्ड इज सिम्टोमेटिक लाइक देयर इज ए पेन, ओके, हिंड फुट पेन है, देन यू कैन गो फॉर द एक्टिव ट्रीटमेंट. लाइक शूज मेथड्स में आप जा सकते हैं, सोल्स, इन सोल लगा के जो है, शूज में सोल लगा के जो है उसको दे सकते हैं. ओके, नाउ एक्चुअली जो यहाँ पे फ्लैट फुट है जिस बच्चे को आफ्टर 6 years या 10 years के बाद भी है, तो वहाँ पे जब फ्लैट फुट है उसको आप शू एडवाइस कर सकते हैं. बट शू एडवाइस करने से, शू लगाने से क्या है, इनसोल लगाने से, इनसोल वाला शूज़ लगाने से उसका डिफॉर्मिटी करेक्शन नहीं होगा. बट जो शू लगा के जब वो वॉक करता है तो उसका चलने का स्टाइल सही हो जाएगा
और इससे क्या होगा कि नी जॉइंट के ऊपर जो भी प्रेशर पड़ रहा था वो कम हो जाएगा, और आगे जो कॉम्प्लिकेशन आने का चांसेस है फर्दर वो कम हो जाएगा, क्योंकि वो एक अभी जब वो वॉक कर रहे हैं तो एक पर्टिकुलर करेक्ट स्टाइल में वॉक कर रहे हैं, सो कहीं पे भी एक्स्ट्रा प्रेशर या अनड्यू प्रेशर नहीं गिर रहा है या पड़ रहा है, सो दैट कैन बी करेक्टेड, बट द ओरिजिनल डिफॉर्मिटी कैन नॉट बी करेक्टेड। ठीक है, इवन फ्लैट फुट में भी जो है बाद में अगर करेंगे आप 10 साल के बाद जो भी है, तो वहाँ पे ओरिजिनल डिफॉर्मिटी जो बोन में है ना, उसको आप सही नहीं कर सकते हो, बट फर्दर कॉम्प्लिकेशंस जो हो सकता है उसको आप कम कर सकते हो। लेटर एज में नी जॉइंट के ऊपर ज़्यादा प्रेशर पड़ गया, हो सकता है कि 40 साल के बाद उसको नी जॉइंट का पेन शुरू हो जाए, तो वो सब चीज़ों को आप अवॉइड कर सकते हो। ओके, सो दिस इज अबाउट दी फ्लैट फुट। इसमें इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। दिस आर द इंपॉर्टेंट पिक्चर्स, जो नॉर्मल फुट कैसे दिखता है और फ्लैट फुट कैसे दिखता है। ठीक है, कभी कभी हाई आर्च भी रहता है, हाई आर्च इज क्वाइट कॉमन इन सेरेब्रल पाल्सी में, जो हाइपर एक्सटेंशन हो जाता है। ठीक है, तो हाई आर्च भी रहता है, वो भी डेंजरस है। ठीक है, और फ्लैट फुट वो भी डेंजरस है, डेंजरस इन द सेंस एबनॉर्मल है। नॉर्मल फुट आपने देखा जो इसका पिक्चर्स है। सो these are some of the very common developmental or orthopedic problems during the developmental stage of the children. So we have seen bow legs, then knock knees, then we have seen the club foot, then we have seen the developmental dysplasia of the hip, and then we have seen the flat foot. ठीक है, सो देर आर मेनी कंडीशंस, इसका डिटेल में जाएंगे तो बहुत सारी चीज़ है, बट दिस इज अ वेरी सुपरफिशियल टॉक, सो दैट आपको जो है कुछ बेसिक चीज़ें पता चले। ओके, सो विद दिस वी कंक्लूड, थैंक यू।